Hello, so in this lecture of atomic structure, we'll be looking at electromagnetic radiations ताकि हमको जो रदरफोर्ड का मॉडल का ड्रॉबैक है वो और अच्छे से समझ आए और हम अगला एटॉमिक मॉडल देख पाएँ विच इज़ ऑफ नील्स बोर. So electromagnetic radiations का primary understanding है कि this is a way of losing energy. अगर हम देखें electron loses energy through this. So this is a way of, we can say, electromagnetic radiation is a radiation through which energy can be lost. So we understand this first as a wave. We say electromagnetic radiation is essentially a wave. And wave की अगर बात करें तो wave is something like this. जब भी हम wave की बात करते हैं we think of it as a disturbance that travels through a medium. अगर आप इसको एक medium माने, so we're saying that this is the disturbance that is there in the medium. And this complete set of disturbance, like पूरा disturbance देखें, this complete cycle of disturbance is known as one wavelength. इसका सिंबल होगा लैम्डा. तो इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑसिलेटिंग दिस एंड, लाइक वी आर ऑसिलेटिंग दिस एंड. जैसे जैसे हम इसको ऑसिलेट कर रहे हैं वैसे वैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है. सो व्हेन आई डू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेशन आई एंड अप जनरेटिंग दिस वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव. ये पूरा वेव जनरेट हो जाता है. सो दैट मीन्स इफ आई डू वन मोर ऑसिलेशन हेयर, लाइक अगर मैं एक और ऑसिलेशन करूँ तो ये वाली वेव जो है ये तो यहाँ आगे पहुँच जाएगी और यहाँ क्या होगा, यहाँ एक और वेव ऐसे जनरेट हो जाएगी, लाइक द ऑसिलेशन दैट आई हैव क्रिएटेड. तो अगर मैं एक सेकेंड में 5 ऑसिलेशंस करूँ, इफ आई डू 5 ऑसिलेशंस हेयर पर सेकेंड, दैट मीन्स एक सेकेंड में ये 5 वेवलेंथ्स जनरेट होगी. दैट मीन्स ये वेवलेंथ जो है ये कितना आगे चली जाएगी, 5 लैम्डा. दिस डिस्टर्बेंस और दिस वेव विल ट्रैवल बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 लैम्डा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑसिलेशंस पर सेकेंड is known as frequency, right? This is known as wave frequency. And we say agar frequency 5 hai, to I am saying this is traveling a distance of 5 lambda every second. तो wave velocity हो गया ना, distance traveled per second becomes wave velocity. So I can say अगर मैं wave velocity की बात करूँ, right, v is the wave velocity. So I can say wave velocity is nothing but lambda times, which is one wavelength, times the number of oscillations per second, because जितना oscillation होगा उतना ही आगे जाएगा. So lambda times nu. So I'll simply say wave velocity is nu lambda. So this is true for all waves, not just electromagnetic waves. This is true for all waves. Now अगर हम electromagnetic wave की especially बात करें, so the unique properties of electromagnetic wave is that first, it essentially is made up of electric and magnetic field. ठीक है, it's made up of electric and magnetic field. So the electric and magnetic field of the electromagnetic wave stores energy. So electric magnetic field को energy नहीं चाहिए, sorry, medium नहीं चाहिए होता है propagation के लिए. So electromagnetic wave की अगर हम बात करें, they don't require a medium, right? They don't, ठीक है, they don't, let me write this properly, it's important. So I will say कि they don't require a medium, they can travel in vacuum as well. ठीक है, and electromagnetic radiation की अगर हम बात करें, in vacuum and air, in vacuum and approximately in air, they have a fixed velocity of light 3 into 10 raised power 8 meter per second. So जितनी भी electromagnetic radiation होती है, जितनी भी electromagnetic wave होती है, they have a speed of 3 into 10 raised power 8 meter per second in vacuum, or I can say approximately in air as well. So उसका मतलब अगर हम वैक्यूम या एयर की बात करें तो उसका मतलब तो ये भी हो गया ना, अगर ये चीज़ तो कांस्टेंट होगी, सो आई कैन से न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda, right? In vacuum or air, nu is proportional to 1 by lambda. So जितनी भी electromagnetic radiations है, as we can see, there is a speed of light, right? So light भी जो है, that's also electromagnetic radiation, because आप खुद सोचिए, light effectively है क्या? It is energy that is coming to us from sun, right? It's an energy that is going to earth,
and sun to earth के बीच में there is no medium. So only way energy can travel is in the form of a disturbance, in the form of a wave, and that wave is essentially this electromagnetic wave. Why is it only this type of a wave? Because it does not require a medium. सन और अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम नहीं है. सो दैट इज वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एबल टू, लाइक सन इज एबल टू ट्रांसफर एनर्जी टू अर्थ थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट. सो इस पे आगे बढ़ते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल. So this was general wave, this is true for general wave. Now let's look at particular electromagnetic radiation को देखते हैं, ठीक है. So let's move on to the next slide. So अगर मैं electromagnetic radiation की बात करूँ, ठीक है, so electromagnetic wave की बात करूँ, so इस effectively उसमें क्या होता है, देखिए electromagnetic wave में there is electric field, ठीक है, there is electric field which is oscillating like this, like एक electric field है, like so this is electric field along, अगर ये x axis है, ये y axis है, so along the y axis we have electric field. Then in addition to this, what we have is we also have the magnetic field. So magnetic field is something like this, like this is how the magnetic field is, right? This is magnetic field. So magnetic field is something like this. इसको ऐसे कर देते हैं, like this is magnetic field, and this what we had here in this purple color, this was electric field, right? So we have oscillating electric field and magnetic field. So as you can see, electric field जो है it oscillates along the y-axis. Electric field is oscillating along the y-axis, and this magnetic field को अगर हम की बात करें, this is oscillating along, अगर मैं इस axis को देखूं, it's oscillating along the z-axis. So electric field, let me call this as electric field, and magnetic field are oscillating perpendicular to each other. So that is why this is known as electromagnetic wave. This has electric field and magnetic field oscillating perpendicular to each other, and the direction of propagation is in the x-axis. So अगर हम इन तीन चीज़ों की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की और वेव की अपनी वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ये तीनों चीज़ें जो है, you can clearly notice, are mutually perpendicular, right? They are mutually perpendicular. So electromagnetic radiation में electric field, magnetic field and the direction of propagation are mutually perpendicular. Now coming back to the energy consideration of this, ठीक है, let me get rid of this. अगर हम energy consideration की बात करें of electromagnetic radiation, because ultimately हम उसी वजह से पढ़ रहे हैं. So the first postulate here was, like it was said by Maxwell. He said that जो electromagnetic radiation है, जो electromagnetic wave है, इसकी जो energy है, that is proportional to the frequency, and since speed is fixed, this can also mean it's proportional to 1 by wavelength. So we have a relationship here. The relationship here was, हमने इसको constant से replace कर दिया h nu, और again h c by lambda. H is known as Planck's constant, ठीक है, और h की जो वैल्यू है that is 6.634 into 10 raised to power minus 34 joule second. Like this is the value of h. So किसी भी electromagnetic wave की अगर हमको energy find करनी है, we just need to know its frequency, and once we know the frequency, we just multiply it by Planck's constant and we get the energy of an electromagnetic wave, right? So अगर हम electromagnetic spectrum की बात करें, electromagnetic spectrum is all the electromagnetic waves that are there. तो अगर हम उसको देखें, so we can see that, जैसे कुछ चीज़ें तो हमको पता है, जैसे we know that visible light, right? Visible light जो है, that is coming to us from sun, that's also an electromagnetic wave, right? उसमें we know that there is violet and then there is red, right? Like this is visible light, and we know that violet has have wavelength of 380 nanometer, और red जो है, red का जो wavelength होता है वो भी हमको पता होना चाहिए, वो है 760 nanometer. So based on this, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा,
हमने क्या देखा, एनर्जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेवलेंथ। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, एनर्जी ऑफ अ वायलेट रे wave divided by energy of a red wave will be 2, right? You can verify this because inversely proportional lambda मतलब इसकी एनर्जी इससे डबल होगी। अब वॉयलेट से भी कम वेवलेंथ होती है, लाइक there are waves which have lesser wavelength than this, but that will not be seen to us, ठीक है? So this is visible बस इतना है। तो इससे कम होती है यूवी रेस, यूवी रेस से भी कम होती है एक्स रेस की, एंड एक्स रेस से भी कम होती है गामा रेस, राइट? सो वी हैव यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। इनकी वेवलेंथ वॉयलेट से बहुत कम होती है, तो मतलब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम आर वेरी हार्मफुल। और रेड से ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है इंफ्रारेड की, एंड देन देयर इज़ माइक्रो, एंड देन देयर इज़ रेडियो। So this is increasing wavelength. Increasing wavelength means less and less energy. And as you can see, so this becomes less and less harmful, ठीक है? Completely harmless नहीं है, less and less harmful. That is why ये हम अपनी day to day life में यूज़ करते हैं ना, माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं, या कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं हर जगह, पर ये डे टू डे लाइफ में नहीं यूज़ करते हैं। तो एक्सट्रीम मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह में यूज़ होता है, एंड यूवी वी ऑल नो हाउ हार्मफुल दिस इज। सो दिस इज मोर हार्मफुल बिकॉज this is, as we can say, this is decreasing lambda. So this I can say is increasing energy, right? So this is increasing lambda. So I can say this is decreasing energy. Okay? So this collectively is known as electromagnetic spectrum. So these are all electromagnetic waves, and all of them have an energy proportional to 1 by lambda, or energy equal to hc by lambda. Okay? So this is about the wave nature of electromagnetic radiations. Now there was an interesting hypothesis, एक interesting observation था about electromagnetic radiations. This was given by Newton, Isaac Newton. He said electromagnetic radiations are essentially particles. He said they are corpuscles. The word he used was corpuscles, which means packets. These are corpuscles of light or corpuscles of energy. तो he said electromagnetic radiation जो है वो effectively अगर हम उसको देखें, it's just a stream of particles. Like अगर electromagnetic radiation travel कर रही है मान लो इस डायरेक्शन में, so he just said that we're just talking of particles, that it's a lot of particles. It's a stream of particles that is traveling in one direction. And until now we had what Maxwell said, जिसकी हमने expression भी लिखी. So what we knew was, we said कि electromagnetic radiation अगर travel कर रही है from one point to another point, it's traveling like a wave, it's traveling like this disturbance through medium, right? बट अल्टीमेटली काम तो सेम है ना. अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम एज अ वेव देखें या एज अ पार्टिकल देखें, द जॉब सीम्स टू बी फिक्स. द जॉब इज टू प्रोवाइड एनर्जी. सो दिस इज लाइक अ कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस. लाइक ये आप सोच रहे हो ना कि कंटिन्यूस ऑसिलेशन हो रही है, उसी से तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है ना. सो इट इज क्रिएटिंग, इट्स अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी. लेट्स से दिस इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी एट द रेट ऑफ 10 यूनिट्स पर सेकेंड. ठीक है. एंड यहाँ हम क्या कहेंगे कि हर एक पार्टिकल की एक अपनी एनर्जी है, और वो पार्टिकल जैसे इसको मिल जाएगा इसको एनर्जी मिलेगी. तो आई कैन से हाइपोथेटिकली हर एक पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 1 यूनिट है. ठीक है. सो नाउ विद रिगार्ड टू एनर्जी ट्रांसफर, इफ दिस प्रोसेस हैपन्स फॉर 5 seconds, the energy transferred is 50 units. If this process happens for 2.5 seconds, the energy transferred is 25 units. Well, that's fine. But what if this process happens for 0.134 seconds? The energy transferred is 1.34 units. तो जितनी देर के लिए प्रोसेस होगा, जितनी देर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलती रहेगी, उतना एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगा. यहाँ अगर देखते हैं, यहाँ अगर 10 पार्टिकल इधर आए, द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड इज 10 यूनिट्स. अगर 25 पार्टिकल आए, द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड इज 25 यूनिट्स. To transfer 1.34 units of energy in this case, I need 1.34 particles, which is impossible. I cannot have one, either I have one particle going here or I have two particles going here. I cannot have one particle. So the energy that can be transferred here will always be
n times 1 unit, right? So this is n times 1 unit, because एक यूनिट तो मिनिमम एनर्जी है, एक पार्टिकल की एनर्जी है, या पार्टिकल इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, एक पार्शियल ट्रांसफर नहीं है. सो द एनर्जी ट्रांसफर हियर इज क्वांटाइज्ड, राइट? इज अ डिस्क्रीट, अ डिसकंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर. और अगर यहां हम देखें कंटिन्यूस, सो दिस इज अ कंटिन्यूअस बिहेवियर, राइट? एंड दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर. So this is essentially continuous, matlab this is wave nature, and this is particle nature. So this is, if you think of it, wave और particle जो है वो एकदम opposite behavior है. Wave means continuous energy, particle means discontinuous energy. And we are saying कि electromagnetic radiation is both of them, because there is evidence कि ये wave है. If you look at reflection of light, अगर हम refraction की बात करें, reflection, refraction, diffraction, sorry यहाँ लिखना चाहिए था diffraction, this is all explained by wave nature of light. और अगर हम देखें photoelectric effect, that proves कि ये तो particle है. So that means light being a particle is also correct, light being a wave is also correct. So combining this, what we say is, we say that these particles are essentially photons. ठीक है, ये जो particles है ये photons है, और हर एक photon की अपनी अपनी एनर्जी है. ठीक है, तो हम ये कहते हैं, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा और इसमें देखा, तो हम कहते हैं कि हर फोटोन का एक एसोसिएटेड वेव नेचर है, एक एसोसिएटेड वेवलेंथ है, एक एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी है. सो हर एक फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज h times nu. This is energy of each photon. Each and every photon has an energy of h nu, and energy of an electromagnetic radiation is energy of each photon into the number of photons that are there, right? So what we are saying is कि हर एक photon का energy is h nu और total energy is n h nu. So this is a very important relationship. Reason being, the moment I look at h nu, I straight away say that this is wave nature. I'm talking of a wave. But the moment I look at n, I say, okay, we're talking of a particle. तो इसका मतलब we're talking of a dual nature. So electromagnetic radiations have a dual nature. They are wave as well as particle. So I'll say electromagnetic radiation is nothing but collection of photons, and each photon has an associated wave nature. Energy is h nu. I hope this is clear. Let's quickly look at an example to understand this. Let's think of it कि हमारे पास एक bulb है, ठीक है? We have an approximately a blue colored, ठीक है, bulb, like there's a bulb which is glowing, and it's rated as 20 watts. So that means 20 watts. I hope सबको समझ आ रहा है. 20 joules per second. Let's assume 100% efficient है. So that means it's providing energy at the rate of 20 joules per second. किस form में? In the form of, like in the form of radiation. Light है ना? In the form of light that it is giving out. Now it is given that the wavelength that it gives out is 400 nanometer. जो wavelength है इसकी, जो भी light ये दे रहा है, is 400 nanometer. And based on that, we need to say कितने photons per second आ रहे हैं, because हमको ये समझना है कि हर photon की एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसका मतलब क्या हुआ, इससे बहुत सारे photons आ रहे हैं हर सेकंड में. तो हर photon की अगर एनर्जी देखें, each photon has an energy of hc by lambda, which is 6.634 into 10 raised power minus 34 into 3 into 10 raised power 8 by lambda, which is 400 into 10 raised power minus 9. If you look at this, this is actually a very small number. This is of the order of 10 to the power minus 17. कुछ ऐसा ही है, minus 17, minus 18. So एक photon की बहुत कम energy होती है, but this is providing 20 joules energy per second. That means it's providing lots and lots of photons. So I'll simply say E is equal to N hc by lambda.
और एच सी बाय लैम्डा में हम क्या पुट करेंगे, जो एच सी बाय लैम्डा जो ये है एच सी बाय लैम्डा दैट इज एसेंशली दिस एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, और E जो है E इज द टोटल एनर्जी, ये क्या आ जाएगा 20 joules. So you'll put 20 joules here, you'll put hc by lambda here, and based on that you can simply calculate the number of photons. So I hope this is clear. So try to calculate this value of n, and it will be a very large number. I can tell you it will be a very large number. ठीक है, मतलब it would be of the order of 10 to the power 19 or 17 something like that. वो आप लोग चेक करिए and comment your answer, and I'll let you know if it's correct or not. So in the next lecture we'll be looking at the photoelectric effect to further understand the electromagnetic radiation. Okay, so until then, goodbye.